Magnetometer is an arrangement or apparatus which is used to determine the ratio of magnetic dipole moment of two bar magnets. So and this is an extra topic, not in the NCERT directly, but न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं. So if suppose we magnetometer क्या था, एक ग्लास का बॉक्स जिसके अंदर a pan is fixed, in that pan we keep a bar magnet. इसको पहले मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, and there is a pan in which we keep a magnet attached with a thread, and that thread is passed through a slot. So this is a rough arrangement of a magnetometer. मैग्नेटोमीटर को हम पहले मैग्नेटिक मीडियम की डायरेक्शन फाइंड करके उसमें अलाइन करते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, एंड देन द मैग्नेट इज केप्ट. Right, so when that magnet is oscillated slightly, it start performing SHM with the time period 2 pi under root of I upon m into VH. This was the principle. दो अलग मैग्नेट्स हैं, दोनों का डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है, हमें उनको कंपेयर करना है M1 और M2 को. सो फर्स्ट मेथड वाज, फर्स्ट स्टेप वाज, दोनों मैग्नेट के लाइक पोल्स को साथ में रखते हैं, नॉर्थ नॉर्थ टुगेदर, साउथ साउथ टुगेदर, एंड देन वी पुट इन दिस पैन एंड वी ऑसिलेटेड. So dipole moment is a vector quantity, but moment of inertia can be considered as a scalar quantity. So जब दोनों को एक when both the dipole moments are in the same polarity, the total moment of inertia become I1 plus I2. The total dipole moment become M1 plus M2, and it is oscillating in the external magnetic field of Earth, so into VH. ये पहले के लिए था. Second case में we keep this magnet in opposite poles. When the opposite poles of magnets are together, their dipole moment will be subtracted. Moment of inertia of this arrangement will still be same because that is a scalar quantity. हमने शायद कर लिया था कुछ, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1/2. Yes sir. Divide and then calculate the M1 by M2. ठीक है. So ये पहला एप्लीकेशन था. जस्ट फॉर रिकैप, दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स को कंपेयर करने का तरीका है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. Second application is to compare the magnetic field produced by two different magnets. Second is to compare the magnetic field produced by two magnets. So भी एक तरह से यही हो गया कि कौन सा मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सेम डिस्टेंस पे अगर हम दो अलग अलग मैग्नेट को रखते हैं, then which one produces stronger magnetic field and how many times that ratio is. First is to compare the magnetic moments. M1 by M2 ratio can be calculated by using this time period.
Yes. Second application is to compare the magnetic field of two magnets. इन पे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स पे. Two unknown magnets, we don't know their dipole moment, बट हम उनकी मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर. हम शॉर्टकट में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थ्योरी तो इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज द मैग्नेटोमीटर. एक मैग्नेट होता है मैग्नेटोमीटर के अंदर, विच इज दैट स्टैंडर्ड मैग्नेट इनसाइड. देयर इज अ मैग्नेट इनसाइड. उसके अलावा दो और मैग्नेट है हमारे पास जिनकी मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है. So this is the magnet which is present inside. So we have two more magnets जिनके मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करने के लिए इसकी लाइन में ही हम बाहर इसके सेंटर से सेम डिस्टेंस पे the first magnet is kept M1. Same distance, our distance from the magnet, we put a magnet of dipole moment M1 suppose. Magnetic field एक horizontal component अर्थ की थी. There is one more magnetic field produced by this external magnet, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐड हो जाएगी. इट बिकम BH plus B1, राइट. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड BH plus B1. अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड. इन दिस टाइम पीरियड इज 2 pi under root of I divided by M into BH plus B1 when first magnet is kept. When first magnet is kept. बाहर हमने पहला मैग्नेट रख दिया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 इसमें ऐड हो जाएगी. Now the time period of oscillation of this magnet is 2 pi under root I upon M times BH plus B1. So हमें B1 और B2 कंपेयर करना है. Similarly when second magnet is kept, पहले को हटा के उतनी ही सेम डिस्टेंस पे हम सेकंड मैग्नेट को रख देंगे. And then the time period of oscillation is 2 pi under root of I divided by M into BH plus B2. And then we also find a time period when no magnet is kept. अगर बाहर कोई भी मैग्नेट नहीं हो, when no magnet is kept, then time period is, if there is no magnet outside, then this oscillator, this magnet is oscillating only because of earth magnetic field under the component of BH. By using these three formula, we have to eliminate I and M. हमें B1 by B2 का रेशियो निकालना है. इक्वेशन 3 divided by 1 और हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 divided by 2. अल्टीमेट फॉर्मूला कुछ आ जाएगा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड आल्सो, कॉन्सेप्ट. क्या करना है, दो मैग्नेट्स थे हमारे पास, पहले फर्स्ट को रखा, फिर वहीं पे हटा के सेकंड मैग्नेट रख दिया. दोनों मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर रहा है. लास्ट केस में दोनों के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर रहा था. दीज टू मैग्नेट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड T divided by 1 T divided by T1 कितना हुआ. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. 2 pi कैंसिल, I कैंसिल, M कैंसिल. इट विल बी रूट ऑफ BH plus B1 divided by BH. थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया. आप एक बार पूरा रख के वेरीफाई कर सकते हो. सिमिलरली T divided by T2, 2 pi gone, I gone, M gone. It will become BH plus B2, root of BH plus B2 divided by BH. Right? Square on both the side. T square by T1 square, और इधर से डिवाइड कर दोगे तो 1 plus B1 by BH. Similarly, T square divided by T2 square is 1 plus P2 by BH.
Calculate the value of V1 and V2 in terms of T1 and in terms of T and T2. T is the magnetic time period when no magnet is kept. T1 is when first magnet is kept. T2 is when second magnet is kept. So again I'm writing little direct. इस one को left side से right side से left लेके जाएंगे और फिर BH से divide multiply. So B1. Similarly, B2 will be T square divided by T2 square minus 1 times BH. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो BH also cancel. The ratio of magnetic field produced by magnet 1 to magnet 2. B1 by B2 will be equal to T square by T1 square minus 1 divided by T square by T2 square minus 1. This is the ratio of the magnetic field produced by two external bar magnets using the magnetometer. ये दो एप्लीकेशन है मैग्नेटोमीटर के, एक तो मैग्नेट की डायपोल मोमेंट कंपेयर करना और बाहर अगर दो हमारे पास अननोन मैग्नेट्स हैं दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना which will produce stronger magnetic field when kept at the same distance. ये पहले प्रैक्टिकल हुआ करते थे हमारे सिलेबस में, अभी नहीं है, सो डोंट वरी. बट न्यूमेरिकल में भूले बैठ के कभी कभार एक आधे क्वेश्चंस आए हैं, सो वी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टेंजेंट लॉ. और एक सेकंड डाउन कर रहा हूं. हाँ ठीक है बेटा, नोट कर लो. ओके. We discussed in detail the Earth's magnetic field, all the neutral points, angle of dip, angle of declination, actual dip angle, apparent dip angle at any place on the Earth. ये पोर्शन एसएल में है बट अलग से स्टार मार्क करके कुछ लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ योर चैप्टर बाय द नेम ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. ओके ठीक है. क्विकली दो और छोटे टॉपिक हैं कंसेप्ट वाइज, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर लेवल. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड टेंजेंट लॉ. ठीक है. सो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं टेंजेंट लॉ. टेंजेंट लॉ मतलब tan लॉ. सो इट सेज दैट, तो उसमें कुछ बहुत खास नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. अगर दो हमारे पास कोई भी वेक्टर्स हैं, एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, tangent law is a very normal thing. Suppose this is vector A and this is vector B. If these two are perpendicular, इनका resultant जो आएगा, if resultant is making an angle theta, then tan theta is equal to the ratio of those two vectors. तो common sense है. अगर दो वेक्टर है A और B, उनका resultant है R, which is making angle theta. Tan theta is B by A. Obvious. इसमें नया क्या है? हाँ, that's the good question. इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसमें से एक one of these vector will always be Earth's magnetic field. That is special in the tangent law. जो हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की यूज करके and then we design some specific type of galvanometer called as tangent galvanometer. एक हमने पढ़ा था moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer works on the principle of torque acting on a loop. Tangent galvanometer works on the principle of tangent law. So what is tangent law? अगर किसी रीजन में दो मैग्नेटिक फील्ड है B1 and B2 और हमने यहाँ पे कोई कंपास या मैग्नेटिक नीडल रख दी, तो वो किसकी तरफ पॉइंट करेगी? विल इट बी B1 और B2 और द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट. Any compass or any needle will always be pointing in the direction of the resultant. So that compass
will be pointing in the direction of the resultant. अब अगर ये resultant का जो angle है, angle of deflection of this compass is theta, then tan theta is equal to b2 by v1, which is very normal thing, very simple vector law. But हम हमेशा इसमें कोशिश ये करेंगे that b1 is along the magnetic meridian, so b1 is equal to bh. For any compass, one of that magnetic field will be the horizontal component of Earth's magnetic field. It is kept in a position that south to north. So tan theta is b upon bh. b2 is b and b1 is bh. So b is equal to bh tan theta. अगर दो perpendicular magnetic field है and one of the magnetic field is the horizontal component जिसके साथ compass ने theta angle बनाया है bh के साथ, then b will be equal to bh tan theta. This is tangent law, which is a very obvious thing from the vectors point of view. अब जब हम tangent galvanometer बनाते हैं, first we'll understand what is tangent galvanometer and then we will discuss why it is required. एक galvanometer जब है हमारे पास already मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो दूसरे की जरूरत क्या है ना? एक से तो काम चल ही रहा है. We have one moving coil galvanometer which is used to detect the current. Tangent law का statement tangent law, if there are two perpendicular magnetic field, one of them is horizontal component, the tangent of angle of deflection is equal to ratio of the two magnetic field. So tan theta is b2 by b1. This is the principle of tangent law. हम हमेशा ऐसा ट्राई करते हैं, one of the two field become horizontal component, so it will be known to us. बस इतना ही tangent law है, definition लिखने की जरूरत है नहीं, because theory में आएगा. BH की वैल्यू पता होती है हमें, हर जगह की अर्थ की मैपिंग हो रखी है, मैग्नेटिक मैपिंग, हर जगह पे अर्थ की BH कितनी है. From a table we can find this value, but again it is constant. This is sure कि वो जो भी है वो constant है. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बहुत बदलती है, जैसे कल आया था कुछ न्यूज में, there will be solar flares and कुछ चेंज हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो यस जाएगी. सर, ये बहुत टाइम से आ रहा है कुछ मैग्नेटिक नहीं होता रहता है, समर्स में ऐसा होता है. समर्स में बिजली बहुत ज्यादा कटती है, उसका भी रीजन यही है, बिकॉज ऑफ द सोलर फ्लेयर्स, विंड्स, इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए. So the communication, internet, broadcast, all get hampered. Power grid fails in the very high temperature. जब ये summers होते हैं, पावर फेलियर समर्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू विंटर्स. उसका भी रीजन होता है, जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जो पावर स्टेशन के पास की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देती है. ड्रास्टिक इफेक्ट समझ में आ रहा है ना? राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें जो हम एक मैग्नेटिक फील्ड को बना लेते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, it is tangent galvanometer. Tangent galvanometer works on the principle of tangent law. The structure is very simple. एक vertical plane में बहुत सारे turns लेते हैं, n number of turns in this vertical plane of radius r, and there is a compass attached to it so that we can maintain this loop in the magnetic meridian plane. So the horizontal component of Earth's magnetic field lies in the same plane. जिस plane में ये loop है, उसी plane में magnetic component होना चाहिए. So that should be magnetic meridian plane. The current which has to be measured or detected, उस current को यहाँ से pass करते हैं. So there are n number of turns. The radius of this loop is r. Current is I. इसके सेंटर पर एक वर्टिकल ऐसे अंदर से मतलब एक वो रखा होता है, that I am not drawing. This is the compass in the vertical, मतलब it is horizontal plane और loop is vertical, right? Loop vertical है, उसके perpendicular, नीचे से मतलब जो support होता है इसके ऊपर ही रखा होता है. There is a
मैग्नेटिक निडल, और इसमें अब दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कौन सी? एक तो जो इसने अर्थ की है, दैट इज BH। वन मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जिस भी करंट को हमें डिटेक्ट करना था, जब वो लूप में पास करेंगे तो करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज गोइंग इनसाइड इनटू द प्लेन, और वो मैग्नेटिक फील्ड होगी सपोज B। सो अगेन देयर आर टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, B is going inside, which is because of this magnetic field of produced by the n number of circular turns. इसका फॉर्मूला था mu naught I by 2r. Since there are n number of turns, it become mu naught n I by 2r. This is going into the plane, BH is in the plane, दोनों के बीच में there will be a compass. So बीच में एक needle होगी जिसका हम एंगल मेजर कर लेते हैं tan theta, and this tan theta will be measured on this compass scale. compass के ऊपर मार्किंग होती है, अगर ऊपर से साइड भी बनाएंगे तो this is the compass. Horizontal direction field is BH. Horizontal direction जो अंदर की तरफ जा रही थी B. As a result, the compass will be somewhere in between, जिसका हम BH के साथ एंगल मेजर कर लेते हैं by using this scale. हाँ बेटा, ये डायग्राम फिर से समझा दो। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वाला? यस सर। Tangent galvanometer is a device which is used to detect the current, है ना? जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, स्पेशल क्या है वो भी हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, बट वी कैन डिस्कस कि बहुत छोटी करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, which is not possible by moving coil galvanometer, because moving coil galvanometer में टॉर्क सफिशिएंट एनफ टॉर्क होना चाहिए कॉइल को रोटेट करने के लिए। When the current is very small, then it has to be always measured by the tangent galvanometer instead of a moving coil galvanometer. So ये बीच में कंपास रखा है, बीच में कंपास रखा है ऐसे। दिस इज वर्टिकल जो लूप है जिसमें हमने करंट पास की, और इसके सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेट रखा हुआ है, मतलब ये कंपास ऐसा रखा हुआ है, इसका एंगल ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे नहीं है। इट इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन में था, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइक दिस। ठीक है, सो अब इसका टॉप व्यू देखोगे तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज प्रेजेंट। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट ने प्रोड्यूस की जो अंदर की तरफ जा रही है, व्हिच इज परपेंडिकुलर। दोनों का रिजल्टेंट जहां पर भी होगा ये एंगल हम मेजर कर लेंगे, लेट्स से दैट एंगल इज 30 डिग्री। so tan theta is equal to B by BH. इन द केस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से हम करंट मेजर करते थे, यहाँ पे कंपास के डिफ्लेक्शन से वी कैन डिटेक्ट द करंट। B is equal to BH times tan theta by using the tangent law, क्योंकि यहाँ पे दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। डायग्राम समझ आ गया मन? हाँ सर आ गया। ये एक वायर का फ्रेम है, उसके सेंटर पे परपेंडिकुलरली यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंपास रखा हुआ है, बस इतना सिंपल सा अरेंजमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने अपना एक BH प्रोड्यूस किया which is in the plane of the loop, and perpendicularly inward will be the magnetic field produced by the current passed into the loop। जिस करंट को हम डिटेक्ट कर रहे हैं। B is equal to BH tan theta। B क्योंकि ये सर्कुलर लूप के सेंटर पर है, इसलिए आ गया mu naught Ni by 2r is equal to BH tan theta। हमें करंट चाहिए, करंट इज 2r BH divided by mu naught times n into tan theta। R is the radius of this loop। R is the radius of this loop। BH is horizontal component constant, mu naught is constant, and number of turns is constant। So इस पूरे को एक constant लिख लेते हैं K, and that K is called reduction factor। K is equal to 2r BH divided by mu naught n। It's called reduction factor of the galvanometer।
सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल था करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक कंपास और magnetic needle is always pointing in at an angle where tan theta is ratio of the two field. So ये B और BH का ratio है, where B is produced by the current in the loop, PH is already known at any place of the earth by using the earth's magnetic map. अब इसका फायदा कैसे हुआ ये समझना है हमें कि क्योंकि अभी द लास्ट स्टेटमेंट वी यूज इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी करंट को मेजर नहीं कर पाता है. So to measure a very small current, we require to measure tangent law. सर वो magnetic, yes. सर रिडक्शन फैक्टर क्या था, मतलब क्या है मतलब फायदा क्या ये है? जो बड़ा सा टर्म था उसको रिड्यूस कर दिया, छोटा बना दिया. So this whole term, R is radius, BH is the horizontal component, N is the number of turns. इसकी वजह से फॉर्मूला रिड्यूस हो गया, that is reduction factor. ऐसे ही फर्जी का नाम है, अच्छा, right? हाँ. Current sensitivity of this galvanometer is much better than the moving coil galvanometer. बस ये हमें यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है why it is better to measure the smaller currents. Moving coil galvanometer smaller currents के लिए suitable नहीं होता क्योंकि हो सकता है वो इतना छोटा हो that the pointer does not deflect at all. The torque produces not sufficient enough to give a deflection. ठीक है. सेंसिटिविटी याद है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट डी थीटा बाई डी आई, और आई है यहाँ पे के tan थीटा. सो 1 अपॉन डी आई बाई डी थीटा 1 अपॉन के tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन के टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड tan थीटा को लिख सकते हैं हम आई बाई के, tan थीटा को लिख सकते हैं हम I by k. So this becomes k divided by k square plus I square. So current sensitivity में current कहाँ पर आया? Denominator में. The smaller the current, more will be the sensitivity for a tangent galvanometer. Sensitivity अच्छी होने का मतलब? सर Yes, डाउट है सर, आप एक बार बोलो। सेकंड स्टेप के बाद समझा दो, k सेक्स स्क्वायर थीटा कैसा आया? डिफरेंशिएट करके, क्योंकि I is k tan theta, so d by d theta of k tan theta. K is constant, tan theta का differentiation सेक्स स्क्वायर थीटा. sec square. Tangent galvanometer is more suitable for measuring the smaller current because it is more sensitive when current is small. माइक्रो एम्पियर से भी छोटी करंट हो अगर तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे विद दी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ना कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. अनदर रिजल्ट इज दैट एरर, इसमें भी हम नंबर ऑफ टर्न्स इतने रखते हैं कि करंट शुड बी मिनिमम, एरर शुड बी मिनिमम. डी आई इज k times sec square theta d theta and I is k times tan theta. ये है error और relative error in current by the tangent galvanometer. Sec square theta आ जाएगा 1 upon cos square theta and tan theta is sin theta by cos theta. Cos theta gone. 2d theta divided by sin 2 theta is relative error in current. हमें एरर मिनिमम चाहिए, एरर मिनिमम के लिए sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए. sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा when थीटा इज 45. सो जब ये कंपास 45 डिफ्लेक्ट करता है शो करेगा then एरर इन करंट इज मिनिमम. इन्हीं दो चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं इन एमसीक्यू. At what of the which of the following angle the tangent galvanometer is most accurate when theta is 45.
जैसे मीटर ब्रिज में भी था, तो मीटर ब्रिज मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिलता है 0, क्लोजर टू 50 सेंटीमीटर इट इज मोस्ट सेंसिटिव, लीस्ट एरर। कैमरा थोड़ा लेफ्ट पे कर दो। 45 डिग्री पे, यस, वो हमने प्रूव कर लिया है 45 डिग्रीज पे। tan थीटा इज 45 डिग्री। जब वो कंपास 45 पे शो कर रहा होगा, उस टाइम पर एरर इन द करंट इज मिनिमम। So we try to use take that reading when theta is, when pointer is, compass is closer to 45 degree, closer to the middle, right? Tangent galvanometer का advantage क्या है? Advantage नहीं बोलना चाहिए. We should be using tangent galvanometer for smaller currents, and for the larger current we should be using moving coil galvanometer. यहाँ पर Sir- larger current लेने का फायदा नहीं है because pointer will be again closer to 90 degree. मिड पे नहीं होगा। हाँ बोलो बेटा। यस सर हेडिंग क्या है? एरर इन करंट। एरर इन नीचे। करंट। हाँ Okay. ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल था, टेंजेंट लॉ, उससे हमने फॉर्मूला निकाल लिया, फॉर्मूले से करंट सेंसिटिविटी निकाली। करंट सेंसिटिविटी दिस प्रूव्स दैट मोर सेंसिटिविटी फॉर स्मॉलर करंट। सेंसिटिविटी का मतलब कितनी एक्यूरेटली करंट हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिवाइस। ठीक है, सो आई थिंक देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा टर्म, बट दैट इज द डिफ्लेक्शन माइक्रोमीटर, बट वो यूज नहीं करते हैं, सो लेट्स लीव इट। Move to the next part, which is required for CBSE as well as JEE: magnetization of material, susceptibility, diamagnetism, ferromagnetism, and paramagnetism. Next, magnetization of material. So all materials have some or the other magnetic property, means जैसे हम क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, similarly all materials have some or the other type of magnetic property, and that is classified on the basis of their magnetic behavior towards the external magnetic field. So जब हम external magnetic field लगाते हैं, some of the materials get magnetized और वो external field को increase करते हैं, they are called paramagnetic substance. Some other type of materials, they opposes the external field, they get magnetized in opposite direction, called as diamagnetic, and some more are very highly magnetized and ये वो खुद ही magnet जैसे बन जाते हैं, they are called ferromagnetic, right? So paramagnetic, diamagnetic, and ferromagnetic, these are the three major classification of magnetic material. But before that, we will see a little bit maths. What happens to the material when magnetic field is applied? Magnetization of material. जैसा कुछ पहले हमने पढ़ा था, polarization in the case of electric field. Electric field लगाने पे electric dipoles form होते हैं, उनका alignment होता है, and the dielectric के अंदर कुछ अपनी एक induced field आ जाती है. As a result, the net field changes. Similarly, now we'll see what is the role of magnetic field when we apply that magnetic field to an external material. So कोई भी मेटेरियल हो, चाहे वो आयरन ही क्यों ना हो, आयरन इज वेरी हाईली मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बट जब तक वो किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इट डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आयरन में कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। रीजन, अगर कोई बाहर फील्ड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, they are spinning, and spinning of electron will be similar to a circular loops, and every circular loop has its own magnetic dipole moment, but that dipole moment are randomly oriented. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल किसी एटम के अंदर वाला है, ऐसा भी हो, बट इट डज नॉट हैव, right? So that is the electron spin.
electron spin in random direction. They are oriented randomly so that net dipole moment is always zero. Net dipole moment of all the electrons which are spinning is always zero. ये वैसे ही हो गया जैसे in absence of external electric field, electrons are randomly moving, but their average velocity is zero. There is no current. Right? समझ तो आ ही रहा है? Okay. अब किसी भी मटेरियल के लिए जब हम डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड पर यूनिट वॉल्यूम. Dipole moment is preferred over dipole moment per unit volume, and that is called magnetization vector. किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. इसमें सिंबल और नेम काफी मिलते जुलते हैं, सो बी केयरफुल. यूनिट देख के भी डिसाइड करना पड़ सकता है. Or it is also written as intensity of magnetization. This is another term that we are defining. किसी भी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए it is defined as net dipole moment per unit volume. Net dipole moment per unit volume is defined as intensity of magnetization. कि हम किसी एक मटेरियल की बात करें और मटेरियल में हर एक का तो हम नहीं काउंट कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द साइज there will be many large number of dipoles. That's why we always prefer writing it per unit volume. किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. राइट? यूनिट क्या होगी इसकी? डाइपोल मोमेंट की यूनिट हुआ करती थी एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर. दिस इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर. एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, ये डिवाइड बाय मीटर क्यूब. एम्पियर पर मीटर विल बी द एसआई यूनिट. इससे देख के हम डिसाइड करेंगे कि वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है. It may not be written clearly, so from the unit, if it is ampere into meter square, it is net dipole moment. If it is ampere per meter, then it is intensity of magnetization or magnetization vector, usually denoted by capital M. ये तो हो गया जब हमने बाहर कोई फील्ड नहीं लगाई. As we apply an external field, फिर क्या होगा? When external field is applied, then what happens? सर अलाइन हो जाते हैं. Align होना स्टार्ट हो जाते हैं. Absolutely. When external magnetic field is applied, क्यों align होते हैं? Why? सर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाती है ना, तो वो Potential difference नहीं है. There is no electric field. Now we are in the magnetic domain. When sorry. external magnetic field is applied, then what happens so that they start aligning themselves? क्या रीजन है कि वो align होना स्टार्ट हो जाता है? सर force लगती है. Force is always zero on any dipole. पढ़ चुके हैं हम closed loop में. Yes. There is no force. Any closed loop net force is zero. Why they start aligning in the direction of external field? सर क्या पोल्स अट्रैक्ट होते हैं, कुछ मैग्नेटिज्म भी ऐसा है. Why they, anyone? Kylie, why this dipole start aligning itself in the external field? Kylie, why it start aligning? पहले रैंडम से थे, अभी एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए. Why? Aishwarya, why dipoles align themselves? Sir, Yes. I'm not sure, but the net force in the dipole is zero. Net force is always zero in any position, any orientation.
When theta is equal to 0, then torque is also 0. Force is 0, torque is 0, and theta 0 is a stable equilibrium position. Stable equilibrium position is also minimum potential energy position, and anything wants to be always in minimum potential energy state for the stability. Right? तब तो उनकी मर्जी थी, रैंडम है. अभी बाहर से फोर्स कर दिया सीधे इसी डायरेक्शन में. इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड they will be in stable equilibrium only when they align themselves. Theta 0. ऐसे तो सारे फ्री थे, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल बाउंडेशन नहीं है. दे आर फ्री, रैंडम. इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर रहे हैं, कहीं भी स्पिन कर रहे हैं. करेक्ट. एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, if all the dipoles align themselves in the direction of external field, it is stable equilibrium. Stable equilibrium में force 0, torque 0, and potential energy is minimum. Right? And anything wants to be in minimum potential energy state according to chemistry also, according to thermodynamics also. When the energy is least, stability is most. Less energy, more stable. Right? एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में हमेशा एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेंगे. और अब इनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. क्वाइट ऑब्वियसली वी कैन सी, बिकॉज नाउ ऑल डायपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन. नाउ दे विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. BM is magnetic field due to the dipole formation inside. मैग्नेटाइजेशन किसने किया? एक्सटर्नल फील्ड ने. एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इसके अंदर के डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा. नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो. Since it is not zero, it means it becomes another magnet kind of thing that will produce its own magnetic field, that is BM. B naught is external field applied. BM is magnetic field due to magnetization or due to this. B naught is external field and BM is magnetic field due to magnetization. Is magnetic field due to magnetization. So जब हमने बाहर से फील्ड लगा दी तब नेट फील्ड कितनी हो गई? B naught was already there. एक BM और प्रोड्यूस हो गई. So the net field inside the material become B naught plus BM. Exactly similar to again the dipole electric dielectric kind of thing. डाइलेक्ट्रिक में भी कुछ ऐसा था, बाहर से फील्ड लगाते हैं, डाइपोल्स के अंदर अलाइनमेंट होता है, बट उसमें अपोजिट डायरेक्शन में था, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. नेट मैग्नेटिक फील्ड when this material gets magnetized, net magnetic field inside the material B is equal to B naught plus BM. Vector summation external field हमने लगाई, BM उसने खुद प्रोड्यूस की because of the dipole alignment. Now this magnetized field or the field due to magnetization किस पे डिपेंड कर रहा है? Quite obviously this depends upon how much is the dipole moment formed. जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा अंदर, उतनी ज्यादा उसकी फील्ड प्रोड्यूस होगी. सो इनसाइड जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नाउ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, व्हिच वाज नथिंग बट नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. करेक्ट? सही है. पहले मिसओरिएंटेड थे, जीरो, सारे लाइन हो गए, उनकी अपनी फील्ड होगी. किसने प्रोड्यूस की? एक्सटर्नल फील्ड ने. किसके प्रोपोर्शनल है? कितनी ज्यादा यहाँ पर डाइपोल का अलाइनमेंट होगा, एंड दैट डाइपोल अलाइनमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. राइट? ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो म्यू नॉट आ जाता है बीच में. BM इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स M. B naught external field, BM magnetized field.
दोनों की डायमेंशन सेम थी. अभी क्या हो गया, ये हो गया बी नॉट एंड दिस इज प्लस म्यू नॉट एम. जस्ट टू राइट इन द सेम डायमेंशन एक नया टर्म डिफाइन करते हैं. एक नया टर्म क्या डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सो ऑल अगेन द नेम ऑफ ऑल द टर्म्स आर मोर और लेस सेम. दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड या किसी भी फील्ड के लिए. अभी हम एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम म्यू नॉट से डिवाइड करें, राइट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एच. क्यों बनाया इसको? इसका सिर्फ पर्पस ये था कि हम एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन कर पाए जिसका डायमेंशन m के जैसा है. ये दोनों फील्ड थी, दे बोथ वर b एंड v. नाउ इट इज म्यू नॉट m और b नॉट को हम लिख लेंगे म्यू नॉट टाइम्स h, वेयर h इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. h की यूनिट वही होगी जो m की यूनिट है, विच इज एम्पियर पर मीटर. B naught external field applied, Bm is magnetic field produced due to magnetization, net field is B naught plus Bm. Bm depend करता है m पे, likewise B naught depends upon h. The magnetic intensity है, वो intensity of magnetization है. So all the terms are quite close. थोड़ी confusion हो सकती है आपको, इसलिए units देख के भी हमें decide करना होता है. ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड से रिलेटेड जो है वो है h. अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, if you take mu naught common, there are two components, one is h, another is m. h किसकी प्रॉपर्टी है? एक्सटर्नल फील्ड. h is related with the external field, m is that magnetized field. अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है? Who is causing that Sir, magnetization? external field. External field. Bm is caused by b naught, m is caused by h. So this magnetization is again proportional to the magnetic intensity of external field. Magnetization is directly proportional to the intensity of magnetic field or magnetic intensity, and ये डिपेंड करेगा उसके मटेरियल पे कि उसने बाहर की मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कितना अपने अंदर अलाउ किया है एब्जॉर्ब होने के लिए. हाउ ससेप्टेबल इट इज. दिस काई इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि m और h दोनों का डायमेंशन सेम है. ठीक है, लॉजिकली है, सब सही सही चल रहा है. शुरू में कोई फील्ड नहीं थी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज जीरो. व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फील्ड B नॉट, इट कॉजेज ए डायपोल अलाइनमेंट. डायपोल अलाइनमेंट से एक छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा अंदर, उसकी अपनी फील्ड है Bm. दैट Bm इज रिलेटेड विद m, लाइकवाइज B नॉट इज रिलेटेड विद h. m इज द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज्ड फील्ड जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है. h इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. Inside, magnetization is caused by the external field, so m is proportional to h. Right? Chi, this is pronunciated as chi, chi. Chi is a dimensionless quantity which represent the magnetic behavior called as magnetic susceptibility. As the name suggests, if it is absorbing the magnetic field, it is allowing the magnetic field, it will be positive. Hence it is called susceptibility. Right? Yes. Based upon the value of psi, the materials are classified. अब इसको यहाँ वापस substitute कर लेते हैं. This becomes mu naught h plus chi times h. Mu naught into 1 plus chi times h. 1 plus chi is called relative permeability, mu r. This is the relative permeability of that material. And mu naught into mu r is called overall mu for that medium. B is equal to mu times h.
where mu is permeability of vacuum multiplied by relative permeability of that medium. So this is the ultimate formula, that the final magnetic field produced is also directly proportional to H. B is equal to mu times H. So इतनी सी maths थी, अब इसके basis पे we will understand how these materials are classified further. Yes, समझ आ रहा है? Vineet? Yes, sir. Okay. So this is a theoretical, but इसपे कुछ numericals भी हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं related to the advanced questions. वैसे तो एडवांस के सिलेबस में डायरेक्टली ये पार्ट नहीं है, ferromagnetism, diamagnetism and paramagnetism, but some of the informations are given in terms of H. So okay, next डालना classification of materials. इसमें कोई डाउट? एनी पार्ट नॉट क्लियर? दिस इज अ प्योर मैथ्स, सिंपल सा कुछ अंडरस्टैंडिंग है. एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो अंदर के मैग्नेट बन जाएंगे, डायपोल से अलाइनमेंट होगा, डायपोल के अलाइनमेंट से उनकी अपनी फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल है. एक्सटर्नल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, कितनी ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर ससेप्टेबल है एब्जॉर्ब करने के लिए, दैट डिटरमाइंस द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल. अगर वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब कर लेता है, it will increase the overall magnetic field called as paramagnetic. If it repels or decreases the external field, it's called diamagnetic substance. And if it completely absorbs and makes the magnetic field many times larger, then that is called ferromagnetic. So net formula जो final का है, that is B is equal to mu naught into 1 plus chi times H. Depending upon the value of chi, we can classify material into 3 categories. Classification of material based upon their magnetic behavior. First is paramagnetic. ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में हम किसी दूसरे तरह से पढ़ते हैं, but they are exactly same thing. So the same paramagnetic material we are talking about. Paramagnetic substances की definition क्या होती है केमिस्ट्री में? So repelled by the external magnetic field. Repelled. Unpaired electron. The substances which have unpaired electron. Shared is not repelled, it is actually attracted. Okay. So physics में हम definition क्या लिखते हैं? These substances which are very weakly magnetized. Weakly magnetized in the direction of external field. Magnetized in the direction of external field. External field की direction में होंगे, but it will be aligned in the direction of external field, but it will be very weakly magnetized. Weakly का मतलब थोड़ा सा magnetization. So for paramagnetic substances, its susceptibility is greater than 0, but quite less than 1. Like 0.0016 type. Paramagnetic substances जो है जो external magnetic field को थोड़ा सा increase कर देते हैं, in the direction of external field magnetized होते हैं, but very weak magnetization. So magnetic field increases by very small value. Mu r is 1 plus psi. So mu r will be greater than 1. Again, it will be very, very less. 1 plus epsilon, where epsilon naught is tending to 0. थोड़ी सी इंक्रीज होगी बस. अगर हमने 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी तो इट विल कम 1.01 टाइप्स, 1.001 टाइप्स. कोई भी ऐसा नंबर है which is tending to 0, tending to 0, very small positive number. Mu will become greater than mu naught, so दोनों तरफ h से multiply कर दोगे, b will be greater than b naught. That is the property of paramagnetic substance जो हम physics में लिखते हैं.
केमिस्ट्री में द डेफिनेशन इज द मटेरियल्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो always there is a dipole which will be aligned in the direction of external field. B is net field. B is net field. B naught is the external field produced. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो नेट फील्ड होगी वो बाहर जब हमने फील्ड लगाई उससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, बट वो बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा. इट्स वेरी वीकली मैग्नेटाइज्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम, इसको थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे. आप अपने आप एग्जाम में लिख सकते हैं. ये बोर्ड में भी आता था सब्जेक्टिव में, नाउ इट इज ऑब्जेक्टिव, सो यस इट विल कम इन, मे कम इन एमसीक्यू. पहला, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज थोड़ा सा. सो इफ सपोज देयर इज एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और हमने इसके अंदर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया. If you put a paramagnetic substance inside, क्या होगा? This is not a magnet, this is some paramagnetic. Example of any paramagnetic substance? Chemistry वाला कोई भी example ले सकते हो. जिनमें भी unpaired electron होंगे, they all will exhibit paramagnetic nature. Sodium, aluminium, copper, सब में unpaired electron जिसमें भी होंगे, they all will exhibit paramagnetic nature. क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया उस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक डायपोल मूवमेंट होगा which will be aligned in the direction of external field. तो ये सपोज कोई कॉपर की रॉड है या एल्यूमिनियम का कोई पीस है, जब हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेट में रखेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड. Which of the following correctly represent for the paramagnetic substance? ठीक है, थोड़ी सी वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो गई बिकॉज इट इज inclined or it is attracted by the paramagnetic substance. हाँ, जहाँ मैग्नेट जहाँ सब्सटेंस नहीं है वहाँ फिर वो नॉर्मल हो जाएगा. Only in the region where paramagnetic substance is present. So I'm just presenting in the diagram. आपको अपने आप लिखना है तो लिख सकते हो. When kept in a uniform magnetic field, it slightly increases the magnetic field. Right? Second, अगर हम किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रिलीज करते, a paramagnetic substance has tendency to move from low magnetic field region to high magnetic field region, क्योंकि उसके वहां पर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है. In a non-uniform magnetic field, the paramagnetic substance move towards higher magnetic field region. कि वो वहीं पे होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है. अभी साइज बहुत छोटा है ना, छोटा सा पार्टिकल है, अपनी जगह पे फील्ड तो बढ़ा नहीं पाएगा. दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल. ये तो एक पीस था बड़ा सा, उसने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दी. ये खुद इंक्रीज नहीं हो पाएगा, कर पाएगा तो खुद वहां पे जाएगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है. राइट? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये लिख सकते हो. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन. Paramagnetic substances have tendency to move towards a stronger magnetic field region. Right? Stronger magnetic field region की तरफ उसके मूव करने की टेंडेंसी. और इसी के फिर कई सारे अलग अलग वर्जन है. जैसे अगर कोई पैरामैग्नेटिक पाउडर ले लेते हैं, some paramagnetic powder form taken in tube or taken in a porcelain tube. ये इसी प्रॉपर्टी के अलग अलग वर्जन्स है. If suppose there is a paramagnetic powdered form, in absence of magnetic field, it will be uniformly distributed. जब हम यहाँ पे magnetic field लगा देते हैं, then it will be completely
it will be completely collected in between these magnets. Same पिछले वाली property है, ऐसे ही liquid form में इन पे. If suppose there is a paramagnetic liquid, in absence of external field, it will be having the same level on both the sides. If we apply magnetic field on any one of these two arms, उस arm में magnetic field, उस arm में liquid का level rise हो जाएगा. It will rise on that side and fall on the other side. Right? These are the basic properties of paramagnetic substance. Next is, अगर हम paramagnetic substance को heat करते हैं, क्या होगा फिर? Electrons की energy बढ़ेगी फिर से. Energy of electron will increase and that will increase the decrease the magnetic field. वो energy increase करेगा तो जो orientation फिर से align हुआ था वो फिर से misalign होना start हो जाएंगे. तो randomness ही बढ़ जाएगी ना, energy बढ़ गई तो वो magnetic field की वजह से एनर्जी जो टेम्परेचर से बढ़ेगी वो तो हर एक डायरेक्शन में बढ़ेगी. So this is called Curie's law. On increasing the temperature, the magnetic susceptibility decreases. Magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. ऐसे सारा part हम subject वाली क्लास में पढ़ चुके हैं. In the CBSE class, is inversely proportional to absolute temperature. Capital T should be temperature in Kelvin. Right? What is the cause of paramagnetism? Unpaired electron, जो आपने chemistry में पढ़ रखा है. Unpaired electrons, जितने ज़्यादा unpaired electrons होंगे, देख लो. मैंने कहा बोला नोट नहीं करना है. मैंने कहा बस डायग्राम बना रहा हूँ, मैं थ्योरी में नहीं लिखूंगा, आप लिख लो इसको डायग्राम बना के फटाफट. ये बोर्ड में बहुत सारे आते थे, बोर्ड में अक्सर. बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है क्योंकि इसमें कुछ स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Susceptibility is inversely proportional to temperature because it is on increasing the temperature जो dipoles का alignment था वो break होने लग जाएगा. So third और fourth समझा दो एक बार. बेटा जो सेकंड वाला है उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लो से हाई मैग्नेटिक फील्ड में जाता है. ये एक पाउडर फॉर्म में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, कॉपर का कोई पाउडर फॉर्म. जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में, द मैग्नेटिक फील्ड लाइज magnetic field is between the north and south pole. तो सारे के सारा पाउडर इसके बीच में आ जाएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है. अंडरस्टूड अमन? Yes sir. अमन? Yes sir, आ गया समझ में. ओके. सेम यहाँ पर था थर्ड वाले केस में. दिस फोर्थ एग्जांपल, देयर इज अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड. जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ इनकी मूव करने की टेंडेंसी है. सो द लिक्विड विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. Paramagnetic substance susceptibility is small but positive. Relative permittivity is slightly greater than 1. इन सब पे क्वेश्चन आते हैं. Which of the following can be a paramagnetic substance? A susceptibility कुछ 0.89 या 1.5, 100,
दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा वाला है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इस पे काफी सारे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में पहले ही कर लिया, वी स्टार्टेड विद एक्सप्लेनेशन। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, देयर विल बी फ्री डाइपोल्स एंड those dipoles will be or align itself in the direction of external field. अब आते हैं सेकंड इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दोज व्हिच आर, केमिस्ट्री में क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब जिनमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड हो। इसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, दोज आर कॉल्ड diamagnetic substances. In physics, those materials which are magnetized opposite to external field. The materials which are magnetized slightly or weakly opposite to the external field. Diamagnetic substances are those which are magnetized opposite to external. अब इसको ऐसे क्या प्रॉब्लम है कि ये अपोजिट में मैग्नेटाइज हो रहा है? तो कौन चाहता है अनस्टेबल होना? अपोजिट का तो मतलब हो गया अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल का मतलब वेरी हाई एनर्जी। So why does it want to be unstabilized? एक्सटर्नल फील्ड अगर राइट साइड में, इसके अंदर के डाइपोल्स का अलाइनमेंट लेफ्ट में हो रहा है, इसको स्टेबिलिटी से क्या प्रॉब्लम है? इसको ऐसे क्या समस्या है स्टेबिलिटी से भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? सोचो, लॉस तो फेल थोड़ी नहीं होते, कुछ ना कुछ तो होगा लॉजिक। इन फिजिक्स देयर इज नो एक्सेप्शन। Yes, so you have to think what is the logic, why it is getting in opposite direction. Yes, anyone, any explanation? Yes, कोई तो ट्राई करो यार। नहीं, अच्छा मदी चल रही है। ओके, the logic is because जब भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will always be in paired. One electron will be spinning clockwise, another will be spinning anti-clockwise. So पहले तो उसने अपने आप को अलाइन ही किया एक्सटर्नल वाले की डायरेक्शन में, लेकिन जिसने अलाइन किया उसकी एनर्जी कम हो गई, लेस एनर्जी, मोस्ट स्टेबल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था किसी भी मूविंग या रोटेटिंग चार्ज के लिए? EVR/2। इसकी स्पीड कम हो गई इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट है बट बहुत थोड़ा सा, इट रिड्यूसेस, और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ गई अनस्टेबिलिटी की वजह से, एंड देयरफॉर इट्स डाइपोल मोमेंट इज इंक्रीज्ड। एक साथ दो है, दोनों के डाइपोल मोमेंट अपोजिट, जो सेम डायरेक्शन में वो स्टेबल हो गया, उसकी एनर्जी कम हो गई, वो छोटा हो गया वेक्टर, और जो अपोजिट डायरेक्शन में था उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी, उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। सो एज अ रिजल्टेंट ऑफ ईच पेयर इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन
क्योंकि एक साथ दो पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा 100% एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, एंड एज अ रिजल्ट जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एंड then it will become oppositely magnetized और magnetized in opposite direction। तो प्रॉब्लम इसको स्टेबिलिटी से नहीं है, वो उसकी मजबूरी है, एक होगा तो दूसरा, एक स्टेबल होगा तो दूसरा अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। विच मीन्स अब हम इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वेक्टर वाइज तो एडिशन है, बट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट माइनस बी एम, because the external field is aligned or produced in opposite direction of the external. So for diamagnetic, susceptibility is inversely proportional. Sorry, susceptibility is negative. सर एक बार फिर से बता दो रीजन। बेटा इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन एक की क्लॉकवाइज तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। इलेक्ट्रॉन स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है जिसका डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में वो स्टेबलाइज हो गया, स्पीड कम हो गई, छोटी कम एनर्जी हो गई, उसका डायपोल मोमेंट छोटा हो गया, बिकॉज इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जो अपोजिट डायरेक्शन में था उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी, उसकी डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो जो अपोजिट है उसका डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो गया, और जो सेम डायरेक्शन में, तो एज अ रिजल्ट द नेट डायपोल मोमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। हर एक पेयर की मजबूरी है, एक स्टेबल होगा तो दूसरा अनस्टेबल, और अनस्टेबल वाले का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, राइट। Yes. Susceptibility is negative but greater than -1. Mu r will be less than 1. Mu will be less than mu naught. B will be less than B naught. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पहले से कम हो जाती है, प्रॉपर्टीज सारी पुराने जैसी होंगी, बस एक छोड़ के। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये लो वाले में जाएगा, अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट ना करके स्लाइटली रिपेल करेगा। In any uniform magnetic field, when a diamagnetic substance is placed, the magnetic field line intensity slightly decreases. Second, in non-uniform magnetic field, it has tendency to go from high magnetic field to low magnetic field region, because diamagnetic substance always goes towards low magnetic field. From high to low. So अगर हम वो पाउडर वाला एग्जांपल लेते हैं, if suppose we a diamagnetic substance is taken in a powder form and we apply a magnetic field, the diamagnetic substance will be moved away from it, बाहर आ जाएगा अंदर से। If a diamagnetic liquid is present in the U-tube and we apply a magnetic field, then it will, the level will be dipped on that side जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे तो सिमिलर हैं, बस केवल एक डिफरेंस किस में आया, टेम्परेचर वाले इफेक्ट में। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक प्लस थीटा स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट होगा तो दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से। ओवरऑल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस पेयर विल रिमेन सेम। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक की एनर्जी इतनी इंक्रीज होगी, दूसरे अपोजिट साइड वाले की उतनी डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर।
Negative and constant. Diamagnetic substance, diamagnetism is a universal property. Why? Why diamagnetism is universal property? क्योंकि paired electron सभी में होते हैं, unpaired केवल आखिरी वाला होगा एक. Diamagnetism is universal. Paramagnetic behavior थोड़ा सा strong हो जाता है, right? उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, बाकी सबको बट वो पैरामैग्नेटिज्म वाला बिहेवियर जो पैरामैग्नेटिक का इफेक्ट है वो डायमैग्नेटिक से ज्यादा हो जाता है. तो एक है लेकिन वो फ्री तो है ना, दो है बट एक +2 और एक -1.9, तो ओवरऑल तो 0.1 ही हुआ. तो है बट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं हमेशा, ऐसा कुछ. पैरामैग्नेटिज्म विल ऑलवेज ओवरकम द डायमैग्नेटिज्म इफ देयर इज एनी इवन अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट. ठीक है. ये हो सकता है कि अगर सारे के सारे पेयर्ड हो जाए, सारे के सारे पेयर्ड हो जाए, तो उसमें डायमैग्नेटिज्म ये है वो सबका छोटा छोटा मैग्नेटिज्म मिलके ओवरऑल काफी हाई हो जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा रहता है फेरोमैग्नेटिज्म पार्ट दैट वी विल डू इन द फ्राइडे क्लास. फ्राइडे क्लास में हम पहले इतना पार्ट खत्म करेंगे बिकॉज दैट हिस्टैरिसीस लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. चलो ठीक है. ओके, वी विल कंटिन्यू ऑन फ्राइडे. थैंक यू.